Hello everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's start. Okay. So just a note for everyone. Today we are going to learn a lot of mathematical things. Okay. So just make sure you are sitting with a pen and paper. Else भूल जाओगे सब कुछ. Okay. So whatever we are going to learn, make a note. Try to do that with me. Okay. बहुत सारा मैथ सीखेंगे आज हम. So screen visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So in the last session, we learned about probabilities. We learned about few concepts on probability. Now, along with that, now we will focus on conditional probability. Now, in the last session, you helped me with the definition part of probability. You gave a lot of examples. We discussed a lot of examples, right? Now, what is conditional probability? Now, conditional probability. You remember empirical probability? Can anyone tell me what is empirical probability? Empirical probability, anyone? Okay, let me help you with this. अब बताओ empirical probability क्या था? Empirical probability was something where we first do the experiment and then we do the calculation. In simple probability, before occurring the event, we try to understand the probability or the possibility of a result, right? Now, here in empirical probability, we first conduct the experiment and then we calculate the outcome. In conditional probability, okay. Now in conditional probability, we have two type of events. One is independent event. Another one is dependent event. Okay. Now, independent event and dependent event. Now, let's say we have a bowl, okay, where we have two red marbles
and 2 black marbles. Okay. Now, in event 1, what I'm doing, in event 1, I want to pick up a marble, okay, which is black. I want to pick up one black marble. Okay. Now, this event, when you are picking up one black marble from the bowl, that time, that is an independent event. Why? Because this particular event is not dependent on any other event. Understand carefully. आप जब एक मार्बल पिक कर रहे हो from the bowl where you have 3 red marbles and 2 black marbles, and you are picking up, your goal is to pick up one black marble, right? अभी ये जो इवेंट है ये किसी दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, right? This one is one individual event, independent individual event, right? Now, along with this, can anyone tell me, you have total 5 marbles where you have 3 red marbles and 2 black marbles, 3 red, 2 black. Now, if I ask you, I want to pick up one black marble from the bowl, what is the probability of that event? Any guess? What is the probability of picking up one black marble from the bowl where we have 3 red marbles and 2 black marbles? जल्दी बताओ. Okay, if you guys are not answering, फिर आज तो बहुत टफ है. आप भी कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर नहीं दूंगी. चलेगा ना? No, Ramini. Sorry? The question is, if you want to pick up one black marble from a bowl where you have 3 red marbles and 2 black marbles, what is the probability of that event? Meaning event 1. अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही इवेंट के बारे में डिस्कस की है, राइट? तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? Independent event. सुनाई नहीं दिया. Independent. नहीं नहीं, वैसा नहीं. जैसे यू रिमेम्बर इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, अगर हमारा आउटकम 2 है, मतलब इफ आई एम फ्लिपिंग अ कॉइन एंड दैट इज एन इवेंट, द आउटकम्स आर हेड और टेल. So what is the probability of getting head? 1 by 2, right? Because we Yes. have 2 probable outcomes and उनमें से head will be 1. तो वैसा वैसा probability चाहिए मुझे. 2 by 5. 2 by 5. Very, very good. So it will be 2 by 5. Why? Because
मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 5 एंड उनमें से 2 ब्लैक है, तो दोनों में से कोई भी एक उठा लूं, I will be able to reach my goal. Okay. Now, next, event 2. After picking up one black marble, event 2 is coming after event 1. ठीक है, तुमने एक ब्लैक मार्बल उठा ली है ऑलरेडी. You have already picked up one black marble from the bowl. Now, what is the event 2 now? Event 2 is coming after event 1. Now, what is the probability? What is the probability of picking up one red marble? बताओ. 1/5. 3/5. 3/4. Sorry, 3/4 मैम. 3/5 मैम. 3/4. क्योंकि अभी तो मेरे पास 5 मार्बल नहीं है ना बोल में, एक तो तुमने उठा ली है ऑलरेडी. ओके. ठीक है. So that will be 3 because I have total number of red marbles are 3 and वहां पे total 4 marbles है. ठीक है. Now this one is one independent event क्योंकि ये किसी और पे dependent नहीं है, and this one is a dependent event because this event 2 is dependent on event 1. Clear concept? Independent dependent clear हो गया. Yes मैम. Now we are coming to Bayes theorem. Now Bayes theorem comes from this concept. ठीक है. अभी ये कॉन्सेप्ट से कैसे हमें बायस थ्योरम मिलेगा? Okay. Let's say we are discussing conditional probability. Now, what is the formula for conditional probability? That is probability of A given B. Okay, meaning, let's say if this is your A and this is your B. So conditional probability meaning I'm finding out the probability of A when B is already given. Okay, you can make this one A, this one B. So in that case, it will be probability of B given A. So we are finding out probability of A, meaning probability of event 2 when event 1 is already given. Okay. So what is the formula? Probability of A given B equal to probability of A intersection B, meaning the common part between A and B event, divided by probability of B, which we already know. B तो मुझे already पता है, right? And B के dependency से मैं A का probability ढूंढ रही हूँ, right? Now, if I write the opposite one, meaning probability of B given A
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन तो कॉमन ही रहेगा, राइट? जो दोनों के बीच में कॉमन है वो तुम ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, दोनों सेम ही है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बी एंड ए लिख लू, बोथ आर सेम ओनली। ओके, विल कम टू दैट लेटर। B intersection A, probability of, okay, now what I was telling you, that probability of A intersection B and probability of B intersection A both are same, meaning probability of A intersection B is equal to probability of B intersection A. Both are same only. Meaning if this one is my A and this one is my B, intersection meaning the common part. तो अभी ये तो सेम ही रहेगा, आप A इंटरसेक्शन B लिख लो या B इंटरसेक्शन A लिख लो, कुछ भी लिख लो। ओके, दिस पार्ट विल बी सेम। तो अगर ये दोनों सेम है, इफ वी कैन से दिस, इफ वी कैन से दीज टू पार्ट्स आर सेम, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहां से मैं लिख रही हूँ, ओके? ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो अच्छे से। आई एम टेकिंग दिस वन लेफ्ट साइड, ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये पार्ट को मैं इस तरफ लेके जा रही हूँ, ओके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एनी कंफ्यूजन एनीवन for this equation which we got from this? मैम वन मोर रिपीट Okay, so this is my equation and this is another one equation. यहाँ पे B इवेंट पहले हुआ है, फिर A इवेंट हुआ है, एंड यहाँ पे A इवेंट पहले हुआ है, फिर B हुआ है। ओके, नाउ वी आर कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस। नाउ व्हाट टू डू, ये राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाना ये सबको पता है ना? इफ यू हैव समथिंग एट द राइट साइड एंड वो अगर आप इक्वेशन में लेफ्ट में लेके जा रहे हो तो वो ऑपोजिट हो जाता है। मीनिंग राइट से लेफ्ट में जाने से प्लस माइनस हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो जाएगा, ऑपोजिट होगा। ये सबको पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मैंने कुछ भी नहीं की है, इसको इस तरफ ही एक तरफ ही रख ली है, बस इसको दूसरे साइड में लेके चली गई मैं। तो ये एक साइड में रह गया एंड बाकी इसको मैं दूसरे साइड लेके चली गई। तो यहाँ पे तो ये डिवीजन में है, जब दूसरे तरफ चले जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे तो ये डिवीजन में था, तो ये लेफ्ट में जब जाएगा या ऑपोजिट में जब जाएगा देन इट विल बी इन अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो मैंने वो ही किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये दूसरे तरफ था एंड इसको इस तरफ लेके चलेगी। सेम आई विल डू फॉर दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू probability of B given A into probability of A। सेम इसको इस तरफ लेके चली गई बस।
ठीक है ना? ये एक इक्वेशन, ये और एक इक्वेशन। कंफ्यूज्ड एनीवन? सिंपल मैथ्स। नो मैम। ओके, तो अभी हियर वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये दोनों सेम है, मीनिंग ये एंड ये सेम है। तो इफ these two are same, can we say that this and this is also same mathematically? Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat again? So what I'm saying, if this one and this one are same, वो तो हमने यहाँ पे लिख ही ली है कि probability of A intersection B and probability of B intersection A are same. तो अगर ये दोनों सेम हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों भी सेम है? So it's Yes, like ma'am. if I say A equal to B, okay, and here I'm saying C equal to D. So if I'm telling you that A and C are same, so if A equal to C, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि B and D भी सेम है? Yes, mathematically it is same. It is same. So let's do that. So this equation and this equation are same, क्योंकि ये दोनों सेम है. Okay, now probability of A given B, probability of B equal to probability of B given A into probability of. Okay, now I'm keeping it this side only. And इसको मैं राइट में लेके जा रही हूँ. तो ये क्या होगा राइट में आके? इसको अगर मैं राइट में लेके जाऊँ तो क्या होगा? Divide. Divide. Divided by probability of, and we got our Bayes theorem. ये है Bayes theorem का फॉर्मूला. Okay, so this is called posterior probability. This is called likelihood probability. This is called probability, and this is called marginal probability. Okay, this is the formula. This is how we derive the formula. Now आप एक स्क्रीनशॉट ले लो का पेज का ले लो एक्चुअली. मैम, आपने तो सेकंड लाइन जो राइट किया ना वो समझ में नहीं आया, आपने कहाँ से वैल्यू ली है उसकी? क्या हुआ? जो आपने सेकंड लाइन जो राइट की है ना वो समझ में नहीं आया, आपने कहाँ से राइट की है, कहाँ से वैल्यू ले रखी है? कौन सा सेकंड लाइन? सेकंड लास्ट. ये यस वाला? मैम, यस मैम, यस.
Can anyone explain this line? मैम वो मल्टीप्लाई में था, उसको नीचे डाला, फिर वो डिवाइड में आ गया। हाँ, हमने तो यहाँ पे डिस्कस की ना कि ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम ही है, तो वही मैंने लिखा, ये वाला पहले लिखा लाइन, फिर ये वाला लाइन यहाँ पे लिखा। ओके। हम्म। If you are done, just say done. Over chat. डन मैम। मैं रिमूव कर रही हूँ। हाँ, okay. Next is hypothesis testing. Now, last time we started with one example. You remember population and sample के लिए कि अगर आप एक किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो and your topic is the reasons behind children suffering from polio. So in that case, what will happen? You first need to write your two hypotheses. Now, when talking about hypothesis, we have two type of hypothesis. One is null hypothesis and one is alternative hypothesis. Now, let's say, for example, you already know the concept of population and sample, right? Can anyone tell me what is population and what is sample? Population means complete count and sample means limited count. Means complete data and sample means like we will get limited number of data. Okay. In that case, data is what you collect. So, population and data are not same. तो तुम्हारा कलेक्ट करने के बाद वो डेटा बनेगा. तो पॉपुलेशन इज नॉट योर कंप्लीट डेटा. डेटा तो तब बनेगा जब तुम उन लोगों से क्वेश्चन पूछ के फिर तुम लिख के घर वापस आओगे, या यू आर गोइंग टू यूज दैट आंसर्स एज योर मीन्स तो डेटा. टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहेगा उसमें से, सैंपल में एक लिमिटेड रहता है ना, उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम सर्वे के थ्रू। हाँ, पॉपुलेशन भी लिमिटेड ही होता है. ओके। पॉपुलेशन मीनिंग योर टारगेट पीपल. तो अगर तुम्हारा टॉपिक है कि
कि why people or why children are suffering from polio. So children who are suffering from polio, all of them are your population. तो वो भी limited ही है. That also has a number. तो वो target people are your population. And उनमें से जितने के ऊपर आप काम करोगे, that is your sample. Got it, ma'am. So abhi, when we are talking about hypothesis, we have two type of hypothesis. One is null hypothesis, one is alternative hypothesis. This one is called null and this one is called alternate hypothesis or alternative hypothesis. Now, these two are mathematically opposite, meaning if you are accepting this, by default you are rejecting this. If you are accepting this, by default you are rejecting this. Okay, they are mathematically opposite. Now let me give you some example of null hypothesis. Let's say there is a company, cold drinks company, where you are saying कि in their 500 ml bottle they provide 500 ml cold drinks only. Okay, and in alternative hypothesis you are saying that no, in their 500 ml bottle they are not providing exactly 500 ml of cold drinks. Okay, so in null hypothesis what we do, we say that there is nothing special or nothing different happening. Things are normal. Okay, there is nothing special happening. Now when talking about hypothesis, there is another important thing called p-value. Okay, now when you are running one research work, your first step is to decide your population and sample. Okay, then we collect data. Then we try to understand or try to write our hypothesis. Okay, then we decide our significance level. Now what is this? We'll come to that. Then we do some test. Then we check p-value. P-value is nothing but probability of null hypothesis being true. Is nothing but probability of null hypothesis being true. Okay, this is the definition of p-value. So p-value के help से we check that p-value has a range. तो p-value देख के ही हम check करते हैं कि जो null hypothesis हमने mention की है or whatever null hypothesis you have taken, whether that's true or not. Okay, now in p-value we have a range. Okay, now if your p-value is less than or equal to 0.01, it means very strong case against null hypothesis. Meaning you have enough proof
or whatever test you have done, that telling you, those tests are telling you that we have a strong case against null hypothesis, which is enough to prove null hypothesis wrong. Okay, now if your p-value is between 0.01 to 0.05, 0.5 से कम है and 0.1 से ज्यादा है, it means that has a strong case against null hypothesis. And वो अगर 0.01 है या तो फिर उससे भी कम है, which means your case is very strong. तो हमारा गोल रहता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ करें. We try to find proof. We try to find evidence against null hypothesis. Okay? And अगर हम null hypothesis को wrong proof करते हैं तो by default alternative hypothesis सही हो जाता है. ठीक है? अगर तुम्हारा p वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, ओके, एंड 1 से कम है, इट मीन्स यू हैव अ माइल्ड स्ट्रॉन्ग. अभी यू आर लूजिंग द गेम, मीनिंग अगर तुम्हारा p वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स तुम्हारा केस एकदम लाइक वीक होता जा रहा है. व्हेन यू हैव अ वीक केस, तब तुम्हें नल हाइपोथेसिस को सही मानना पड़ता है. तो आवर गोल इज कि अगर ये 0.p वैल्यू अगर 0.05 से कम है, इट मीन्स सब ठीक चल रहा है. ओके, ठीक चल रहा है इन द केस एवरी टाइम योर assumption माइट नॉट बी ट्रू. मान लो नल हाइपोथेसिस ही सही है. ओके, मे बी द कंपनी इज गिविंग 500 ml ओनली. ओके, वो तो हम डेटा से प्रूव करेंगे, बट मान लो नल हाइपोथेसिस ही सही है. बट योर इफ योर नल p वैल्यू इज लेस देन 0.5, तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं. एंड अगर वो ज्यादा है 0.05 से, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है? इफ योर p वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, मीन्स एकदम भी कुछ एविडेंस ही नहीं है. ओके, दिस इज अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ये पहले लिख लो, देन विल जंप इनटू द नेक्स्ट पार्ट. अभी हम वो टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में सीखेंगे. एक्सक्यूज मी मैम, हम्म एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज. कौन सा? लास्ट 0. ये ग्रेटर देन एन स्मॉलर देन वाला 0.01 से. अच्छा, आप मान लो इससे अच्छा होगा, मैं एक इजी वे दिखाती हूँ. मान लो ये है तुम्हारा स्केल, जहाँ पे मिडिल में है 0.05. तो 0.05 से अगर कम है, अगर इस तरफ जाता है, तो विल एक्सेप्ट, सॉरी, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. एंड अगर इस तरफ गया तो विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस. बस. अगर 0.05 से कम है, इट मींस वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस. तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे. नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में मेरे पास बहुत सारा प्रूव है, तो मैं क्या करूंगी, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी. तो जो मैंने नल हाइपोथेसिस में बोली थी कि
yes they are giving 500 ml only, वो उसके अगेंस्ट में मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है, तो मैं क्या करूंगी, वो वाला स्टेटमेंट रिजेक्ट कर दूंगी, राइट? दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एंड 0.05 से अगर ज्यादा है, इट मीन्स आई डोंट हैव मच प्रूफ, आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग केस. तो मुझे वो वाला जो स्टेटमेंट मैंने दिया था कि हाँ दे आर गिविंग 500 ml ओनली, उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ नहीं मिला है ज्यादा. क्लियर अभी? Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट. I'm deleting. ओके, सिर्फ डिलीट कर रही हूँ. हाँ? ओके, अभी now you have an idea कि when you are doing one research, what are the steps you need to follow? Collect the data, define the um, define your null hypothesis and alternative hypothesis. Then we need to decide the significance level. Now, when talking about significance level, what is this significance level? Significance level is nothing but how much risk you are ready to take while deciding or when accepting your null hypothesis or rejecting your null hypothesis. Okay, after doing all the tests, when you are accepting or rejecting your null hypothesis, how much risk you are ready to take. Okay, before going there, let's understand about type 1 and 2 error. Okay, let's say let's say null hypothesis accepted. When
is true. You have accepted the null hypothesis when null hypothesis is actually true. Second scenario क्या हो सकता है? Null hypothesis you have rejected when null hypothesis is true. Next, null hypothesis you have accepted when null hypothesis is false. और एक सिनेरियो क्या हो सकता है? Null hypothesis you have accepted when null hypothesis is false. और बताओ इनमें से बेस्ट सिनेरियो लाइक राइट सिनेरियो कौन कौन सा है? Which 2, 3 are perfect scenario? नंबर देके बोल दो. फर्स्ट वाला ट्रू है. हम्म फर्स्ट वाला ट्रू और है, बाकी फॉल्स है. बाकी लोग बताओ. Second one and last one. Okay, I got one answer where Sohil saying second and last one. Okay. बाकी सब भी बताओ क्या कर रहे हो? मैम थर्ड एंड फोर्थ आपने सेम लिखा है, लास्ट में रिजेक्टेड आएगा क्या फोर्थ में? ओ Each हाँ of- हाँ हाँ सही 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 सेम लिख दिया गलती से. ये रिजेक्टेड होगा. One and four. Okay, Prajwal. Okay, so Prajwal is right. This one and this one is the perfect scenario because we are accepting when it's true, we are rejecting when it's false. Fine. So this one is correct. मैम बीच वाला सेकंड एंड थर्ड वाला फॉल्स है ना?
हाँ ठीक है, फिर मैं भी करेक्ट हूँ ना? तुमने क्या बोला था? मैंने बोला था फर्स्ट वाला ट्रू, और वो लास्ट वाला आपने एक्सेप्टेड लिखा था, इसलिए मैंने उसको फॉल्स बोला, फिर आपने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। अच्छा ठीक है, तो आप भी सही हो। नाउ कमिंग टू दिस वन, first is a problem, first one is a problem, and third one, sorry, second one and third one, both are wrong, right? Why? Because we are rejecting when it's true, we are accepting when it's false, right? So when it's true and we are rejecting, that time it's called type 1 error. And we are accepting when it's false, that is called type 2 error. Okay, now if I need to show you with chart box, it's true, false, accept and reject. We are accepting when it's true, the good scenario, and we are rejecting, accepting when it's true, correct, accepting when it's false, type 2 error, rejecting when it's true, type 1 error, and rejecting when it's false is correct. Okay, you need to remember this box. Now when it's your type 1 error, we call this alpha, and type 2 error called beta. Okay, now why we are discussing this? Because type 1 error is less dangerous than type 2 error. Let me give you an example. Let's say our null hypothesis says that the medicine is working good. Okay, the null hypothesis saying that the medicine is working good, which is true. Okay, before that, let me give you a scenario. Let's say um once again, type 1 error, we reject the null hypothesis when it's true. Okay, let's say you have medicine A, which we all used to take. Okay, let's say they have invented the medicine in 2000. Okay, now Abhi, recently they have invented another one medicine which is called medicine B. Okay, and after a lot of research and test, after trial, okay, we have decided that the medicine B is working good. Okay, now my null hypothesis says that the medicine is working good. The new medicine, medicine B, is working good. Okay, which is actually true. But after hearing this from a patient, maybe, let's say that patient misleading with
something else, and that patient mentioned that no, actually after taking this medicine I'm getting this problems. Okay, now after hearing these things, we rejected our null hypothesis. Null hypothesis क्या था कि मेडिसिन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, right? And after hearing that from a patient, we rejected the null hypothesis. Null hypothesis क्या था? Medicine is working good, जो कि ना true था, right? Though it was true, still after hearing from a client, from a patient, we decided to reject the null hypothesis. तो जो true था तुमने वो reject कर दी, right? तो क्या we stopped taking that medicine, we stopped selling that medicine, we stopped giving that medicine to other patient. तो हमने यहाँ पे कौन सा एरर कमिट की है बताओ? Which error you have committed? हाँ गौरी, can't you hear me? Am I audible, guys? सुनाई दे रहा है क्या? यस मैम। गौरी आप नहीं सुन सकते हो? अभी आ रही है मैम आवाज। अच्छा अच्छा ठीक है। कल हम थोड़ा बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ, और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो कल। लास्ट 1 घंटे हम वही करेंगे, ठीक है? तो yes, all of you are right. We are actually committing type 1 error. Now अब आप अभी सोचो कि मान लो कि you have ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली कि द मेडिसिन इज वर्किंग गुड एंड दैट इज ट्रू, बट वी हैव रिजेक्टेड दैट, इट मीन्स वी हैव कमिटेड टाइप 1 एरर। तो इसके रिजल्ट क्या होगा कि यू आर नॉट अलाउइंग एनीवन टू टेक दैट मेडिसिन, राइट?
अभी दूसरा सिनेरियो सोचते हैं, टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर मीनिंग there is something which is false but we are accepting that, right? Now let's say we have another one null hypothesis where it says that the medicine is not curing. तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि the medicine is actually good, right? It's curing actually. But तो ये जो स्टेटमेंट है, and if I take the last statement as well, okay, let's write it and I think then it will be. Let's say the medicine is working good. This is the true statement. But you have rejected and stopped giving that to us. Okay, so here you have committed type 1 error. Now another one statement we have where it says that the medicine is not curing. This is a false statement, right? So something which is false and you have accepted and medicine is not curing. This is your null hypothesis, which is actually false. But medicine is curing. Medicine is curing. This is a false statement, let's say. And but you have accepted that yes, medicine is curing. तो ये सोच के तुमने क्या किया, बाकी पेशेंट लोगों को देना शुरू कर दिया. Okay, so medicine is not curing, but you have given to others. तो यहाँ पे तुमने टाइप 2 एरर कमिट की है. तो अभी ये सोचो कि जो मेडिसिन अच्छा है वो तुमने देना बंद कर दिया, इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा या जो मेडिसिन अच्छा नहीं है वो तुमने देना शुरू कर दिया, इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा? सेकंड से. सेकंड से ज्यादा प्रॉब्लम होगा. तो टाइप 2 एरर is more dangerous. So in that case, we take chance or we take risk on type 1 error more. तो टाइप 1 एरर अगर हो रहा है तो that is still takeable, but
Type 2 error is very dangerous. Type 1 error में what we do, we take significance level. Significance level मतलब the decision I'm taking, the statement I'm taking at the end, how much risk or how much wrong you are ready to take. Meaning, मैं बोल रही हूँ कि ये जो statement है, the medicine is working good, I'm rejecting this statement. This is your final decision, let's say. Now, significance level is, let's say, 10% here. Meaning, जो decision मैं ले रही हूँ, there is a 10% chance कि ये decision गलत हो सकता. That is called significance level. If you are taking 5% significance level, it says that you are ready to take 5% chance for this particular statement. कि ये गलत भी हो सकता है. Okay, this one concept called your significance level, and this is called your type 1 and type 2 error. Along with this, let me tell you another one thing which is called A/B testing. ये A/B testing क्या है? A/B testing meaning, let's say you have two hypotheses. In null hypothesis, it says that changing the color of button, let's say you are running two different ads, ad A and ad B. So in null hypothesis, you are saying that the change of the color of the button has no effect on the click-through rate. Click-through rate meaning, let's say you got one ad on your Facebook, okay? कि अगर आपको ये लिपस्टिक खरीदना है तो you click here, okay? Buy now. तो वो रेड में लिखा हुआ है. एंड और एक एड है जहां पे वो बाय नाउ ब्लू में लिखा हुआ है. Okay, so you are running two different ads to check that whether the color, two different color is affecting customers brain or not. ठीक है, ये एक तुम दो तरीका का दो same ad, only the button color is different. You are running two different ads with two different button color. The rest of the things are same. Now your hypothesis is, null hypothesis says that changing the color of the button has no effect on click-through rate. कि आप कोई भी कलर दे दो, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, and in alternative hypothesis you are saying that yes, changing the color of the button will affect the brain or will affect the click through rate. Okay, these two are your two